आज पिला माने आमे +2 अकाउंटेंसी विषय चैप्टर 3 जर्नल विषय रे पढ़िबा। का विषय रे? जर्नल विषय रे। देखो एठी इंट्रोडक्शन फर्स्ट कौन अच्छी इंट्रोडक्शन मीनिंग फीचर्स formats of journal steps involved in journalizing advantages of journal disadvantages of journal rules of journalizing recording of journal entries questions ए विषय आमे पढ़िबा गोटे परे गोटे फास्ट कौन अच्छी इंट्रोडक्शन कौन अच्छी फास्ट इंट्रोडक्शन पढ़िबा accounting process involves 4 stages: recording the transactions, classifying the transaction, summarizing the transaction, interpreting the results. So the first step is recording the transaction in the books of original entry of prime entry. Journal is the book of original entry wherein all the transactions are recorded first in a chronological order. ता माने कोन जर्नल होची प्राइमरी एंट्री जो जर्नल को आमे रेकॉर्ड करू गोटे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे सीरियली तापर मीनिंग journal is derived from the French word jour which means a day. Hence journal is called a day book. It records all business transactions chronologically. It is the first book to record transaction as and when take place. So it is called a book of prime entry or the original entry. The process of recording transaction in the journal is known as journalizing. The entries made in the books are known as journal entries. Clear? तापरे हमें फीचर्स आर फीचर्स कौन ता विषय पढ़िबा एटी केटा पॉइंट अछि 7टा पॉइंट अछि ए 7टा पॉइंट फीचर्स रे जाउछि business transactions are recorded in the journal in chronological order. It is the book of original entry where the transactions are recorded first. It is a day book since all the transactions are recorded daily. It records both the debit and credit aspect of the transaction according to the principles of double entry system. Double entry system रो गोटे प्रिंसिपल अछि डेबिट और क्रेडिट कोटा डेबिट हबो और कोटा क्रेडिट हबो सेही अनुसार हमें ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करिबा. It gives brief explanation narration below each journal entry. It is serves as an information center for future reference. It makes the posting of the transactions to ledger possible. तापर फॉर्मेट ऑफ जर्नल रो फॉर्मेट केमती हो ना एई भलिया एई फॉर्मेट को देखो फर्स्ट कोन अछि डेट तापर पर्टिकुलर्स जोथरे कि हमें ट्रांजैक्शन उरा लिखिबा एलएफ लेजर फोलियो एठी डेबिट अमाउंट पड़िबो आ एठी क्रेडिट अमाउंट पड़िबो किंतु डेबिट कॉलम रे कोउटा डेबिट हबो कोउटा क्रेडिट हबो तार भी गोटे रूल अछि हमें जानिबा. देखो journal is divided into 5 columns. First column कौन ना date. The first column is used to write देखो एठी the first column is used to write the date of the transaction. In this column year month date of the transactions are recorded. तापर पर्टिकुलर दिस इज द सेकंड कॉलम एटा डेट रो डाहण पटे फर्स्ट डेट अछि ता परे सेकंड कॉलम रे पर्टिकुलर्स अछि एथरे कोन अछि ना
Both the aspects of the transactions are recorded. The names of two accounts affected by the transactions are recorded in this column. The name of the कौन कही two accounts affected by the transactions are recorded in this column. The name of the accountant to be debited is recorded first. The abbreviation DR is recorded against the account to be debited. जो account आता माने जो account debit हबो ता पे DR लिखिवा. It is written against the same line close to LF column. LF column सीधारे लिखा हबो. In the next line after leaving a little space from the left टिके ना को छाड़ी की बामरो the name of the account to be credited is written. जो account क्रेडिट हबो टिके छाड़ी की ता तळ को लिखा हबो. It is written in such a manner that it can be clearly distinguished from the first line. एटा एमिति लिखा हबा दरकार जेमिति फर्स्ट लाइन रो अलगा दिसुथिबो. The second account which is credited always starts with the word to. The word CR is not written against the account uh, to be credited. A brief description of the transaction is recorded below to the second line within bracket. This is known as narration. After the narration, a line is drawn in the particular column in order to separate one transaction from the other. ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭିତରେ. ତାପରେ ଏଲ୍ଏଫ୍ ତାପରେ ଡେବିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ fourth column. Debit amount कोठी अछि ना fourth column रे, in which amount to be debited is recorded against the account to be debited. जो account टा debit हबो सेही account टा debit column रे लिखा हबो. तापरे सेमती credit amount. तापरे पढिबा हमें 3.5 steps. जर्नलाइजिंग करिवार steps कोन ना first option देछि ascertain the accounts involved in the transactions. Minimum 2 accounts or more than 2 accounts may be involved in the transaction. गोटे ट्रांजैक्शन सभा पई अति कम रे दीटा अकाउंट रहबा दरकार. फाइंड आउट द नेम ऑफ द अकाउंट्स. ascertain the nature of the accounts involved such as personal account, real account or nominal account. तीनटा अकाउंट को हम ascertain करबा. ascertain the accounts or accounts to be debited and accounts or accounts to be credited by applying the golden rule of the debit and credit. एटा होची पुराना मेथड. ascertain the amount to which accounts are to be debited and credited. Record the transaction in proper format as given above. जेमती ओटा फॉर्मेट रे देखैली सेमती सेही फॉर्मेट रे लिखा हबो. एडवांटेजेस ऑफ जर्नल रो उपकार कोन बा एडवांटेजेस कोन? Chronological record of transactions, narrations, reduces possibility of error, minimizing errors of omission, locations of error. कोडी कोडी एरर हेछि हमहु जणाई देबो, एरर को कमेइबो, ए सब एडवांटेजेस. एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन रो एविडेंस रहइबो प्रमाण. असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. जेतेबेले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तयारी करिबा कि बैलेंस शीट तयारी करिबा ये हमको साहाय्य करिवो. डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नल. एडवांटेजेस हमें जानिले. डिसएडवांटेजेस कोन जर्नल लो ना लेंदी प्रोसेस. ए प्रोसेस ता लेंदी, डिफिकल्ट टू लोकेट. बेले बेले एरर को बा ट्रांजैक्शन को लोकेट करिवा विदाउट डेट रे भारी डिफिकल्ट. तापरे कोन तापरे होउची देखो एठी देखा होउछ तो लेंदी, एठी होची डिफिकल्ट टू लोकेट. बुझछ ना नहीं. तापरे हमें कोन करिया ता पर पॉइंट को जिबा. ता पर पॉइंट रे कोन होची ना difficulty in ascertaining the balance. Difficult the ascertaining the balance. Time consuming. Time
time consuming, time consuming। तापर कौन अच्छी रूल्स 3.8 पॉइंट देखो 3.8 पॉइंट रूल्स ऑफ जर्नलिजिंग, जर्नलिजिंग करिवार रूल्स कौन, रूल्स कौन देख ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, British approach. The most important step in involved the journalism is application of the rules of debit and credit. As we have discussed earlier, as per the traditional classification, there are three types of accounts: personal, real, and real or a property, nominal or fictitious account, for which there are three golden rules. Personal account रे कोन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जे ग्रहण करिवो रिसीव करिवो से डेबिट हबो, जे दबो से गिवर हबो बा क्रेडिट हबो। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट क्षेत्र रे कोन हबो ना डेबिट जहा हम पाखु आसीबो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जहा हम पाखु जीवो। नॉमिनल अकाउंट कोन डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट नॉमिनल अकाउंट क्षेत्र रे। क्रेडिट कोन all incomes and gains are credit। बुझी परछ ना नहीं। तापरे देख मॉडर्न रूल कौन कहूची बा मॉडर्न अप्रोच एसेट। फर्स्ट एसेट अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट कॉलम रे देइची, सेकंड कॉलम रे देइची डेबिट, थर्ड कॉलम रे देइची क्रेडिट। एसेट जते बेले इंक्रीज करिवो डेबिट हबो, डिक्रीज कले क्रेडिट हबो। लायबिलिटी जते बेले डिक्रीज करिवो डेबिट हबो, इंक्रीज कले क्रेडिट हबो। कैपिटल जते बेले डिक्रीज करिवो डेबिट हबो, इंक्रीज कले क्रेडिट हबो। हमर जते बेले हम कथा गोटे उदाहरण दवा, हम पाखरे जते कैपिटल अधिका हबो सेते बेले सब बेले हम अकाउंट रो क्रेडिट शो करिवो। इनकम जते बेले कमिवो सेते बेले डेबिट हबो, जते बेले बढ़िवो क्रेडिट हबो। हम जते बेले इनकम करिया अधिका पैसा टंका ताले हमर सब क्रेडिट बैलेंस देखेबो। एक्सपेंसेस जते एक्सपेंसेस इंक्रीज करिवो डेबिट हबो आउ डिक्रीज कले क्रेडिट हबो। एटा गोटे उदाहरण देइची from the following transactions find out the nature of accounts involved and state the accounts to be debited or credited. Started business with cash, opened a bank account, purchased goods. What exactly I am telling it? Sold goods to RAM, wages paid, rent paid, received cash from RAM। देखो ये started business with cash, ये cash account और capital account अच्छी। cash account, real account, capital account, personal account। cash कैश होची रियल अकाउंट जोटा कि आम पाखरु गला बुझी परछ ना नहीं। कैपिटल अकाउंट होची पर्सनल अकाउंट सेटा होची क्रेडिट। ओपन ए बैंक अकाउंट्स बैंक आउ कैश, पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेस गुड परचेस अकाउंट कैश अकाउंट, दीटा को रियल अकाउंट डेबिट गोटे गोटे क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू RAM, RAM पर्सनल अकाउंट डेबिट, सेल्स रियल अकाउंट क्रेडिट। वेजेस पेड वेजेस और कैश अकाउंट नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। रेंट पेड रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट क्रेडिट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम RAM, कैश रियल अकाउंट RAM पर्सनल अकाउंट एटा डेबिट एटा क्रेडिट। आमे कोन पढ़ी थिले देखो एठी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एठी RAM कोन होउची राम ठारू आमे कैश रिसीव करूछु, राम दउची तेणु क्रेडिट। कैश टा हम पाखु आसुची डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन कोड लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन। एई रूल अनुसार सब जाको एई रूल अनुसार सब होउची। तापरे
इलुस्ट्रेशन 2 से भलिया इलुस्ट्रेशन 2 रे देखो कैपिटल क्रेडिटेड है पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर परचेस अकाउंट डेबिट है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन बैड डेट डेबिटेड है नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल लॉसेस आर एक्सपेंसेस आर डेबिट डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट है क्रेडिट ऑल इनकम्स नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट फ्रेट अकाउंट डेबिटेड है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज पर मॉडर्न अप्रोच एंड अमेरिकन अप्रोच दीटा अप्रोच अच्छे गोटे मॉडर्न आ गोटे अमेरिकन अप्रोच ब्रिटिश अप्रोच तापर देख गोटे सब अकाउंट ये सबू जाक अकाउंट रो शेष सबू जाक अकाउंट रो शेष स्थली बा शेष एड्रेस होची प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबू जाक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जीव तापर बैलेंस शीट रे इनकॉर्पोरेट हबो आमे धीरे धीरे पढ़िबा एटी जर्नल एंट्री विषय को होची सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री गोटे सिंपल आ गोटे कंपाउंड तापरे जर्नल एंट्री केमती हुए हमें शिखिबा किंतु एति की तमे भल से पढ़ी हबो।